अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर की जानब से मेयर न्यूयॉर्क के सीनियर एडवाइज़र अहसन चुगताई और 70 प्रीसेंट के नए कमांडिंग ऑफिसर डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रूस सप्रेनो के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। इसी तकरीब में हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के हवाले से भी फातह खानी की गई। तकरीब में कौंसल जनरल आयशा अली, एम्बेसडर ऑफ हेल्थ बराए UN डॉक्टर सीमा, कांग्रेस वुमेन अवेट क्लार्क के नुमाइंदे ऑरलैंडो रॉस ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। सरदार इम्तियाज़ गढ़ालवी ने तिलावत की सआदत हासिल की, जबकि मोहम्मद असगर चिश्ती और अतीक कादरी ने बारगाह रसालत में हदिया अकीदत पेश किया। नासिर अवान की सदारत में मुनक़दा तकरीब में नज़ामत के फ़राइज़ शेख अशफाक अहमद ने अदा किए, जबकि इस्तकबालिया में कम्युनिटी सेंटर के अहदेदारान ताहिर भुट्टा, मुश्ताक अहमद कम्बो, शमसुज़्ज़मान चौधरी, जावेद चीची, आरफ शेख, परवेज़ जिम्मी, डॉक्टर अनीस आलम, बिलाल शेख, मलक अकरम, मलक इरफान और हशाम समेत कम्युनिटी की मुकामी अहम शख्सियात और अरकान ने शिरकत की। अल्लामा इकबाल सेंटर के कायदीन ने कम्युनिटी सेंटर की जानब से अहसन चुगताई को सीनियर एडवाइज़र मुकर्रर होने, जबकि इंस्पेक्टर ब्रूस सप्रेनो को कमांडिंग ऑफिसर तैनात होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर पाकिस्तानी कम्युनिटी, सिटी इंतज़ामिया और पुलिस डिपार्टमेंट में बाहमी ताल्लुक़ के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी अदा करता रहेगा। You can see the police car front of almost every mosque, and he also visited a few mosques because he want to make a peace that people should be pray peacefully. So we appreciate you increase the security. We saw there front of every mosque this time, and people pray peacefully. हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये सारा कम्युनिटी सेंटर चलाया। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम थे जो कि हमने शुरू किए। हम काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी तक हमने हमारे किसी गवर्नमेंट की किसी जगह से कोई सपोर्ट हासिल नहीं की। हम अपनी मदद आपके तहत आवाम की खिदमत कर रहे हैं। सीनियर एडवाइज़र अहसन चुगताई का कहना था कि मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि न्यूयॉर्क सिटी में आगे बढ़ने और तरक्की करने के मौके से हमारी कम्युनिटी हर मुमकिन तौर पर मुस्तफ़ीद हो। What we do need now is the next generation. Allama Iqbal Community Center, I'm going to beg you and I'm going to urge you and I'm challenging you from here on to bring the youth up in front. Make them responsible. Make them responsible to take the lead. This is my challenge to you. Make our sisters, give them the authority, give them the opportunity to come forward. डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रूस सप्रेनो ने अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी एक मिलनसार और मददगार कम्युनिटी है। उन्होंने कहा कि पुलिस कम्युनिटी के मसाइल के हल में अपना हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। So somebody here earlier said that he thanked us for supporting you, the community. But the truth is, the community, you support us. And to be successful as any precinct CO in the city, there are 3 C's that we have to be able to balance: crime, cops, community, and it's all interrelated. We can't reduce crime without having the community support and without having the cop support. So it's all 3 related. And thank you for the bottom of my heart, everything that you've done. Welcome me in the 70 precinct and happy Ramadan. And I look to build better relationships as we move forward. कौंसल जनरल आयशा अली ने भी इंस्पेक्टर ब्रूस सप्रेनो की तैनाती पर उन्हें खुश आमदीद कहा और उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद आबाद है। कम्युनिटी जितनी खुद को मजबूत बनाएगी उतना ही वो तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगी। When I came here in 2019 for the first time, Allama Iqbal Community Center का जो delegation था was one of the first delegations that I met. So I'm very honored to be actually on ground today in the center with the members of the center and with the members of the community. Thank you so much for having me here, Nasir Evan Sahab, Sham Sahab, everyone else. And really a pleasure to join you all once again for the iftar that we are going to have together. मुश्ताक अहमद कम्बो ने कहा कि हम दुआगो हैं कि माह रमज़ान की इबादत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं और इस माह मुक़द्दस की रहमतों और बरक़ात से ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी बल्कि मुल्क व कौम को भी मुसलसल नवाजते रहें। आज का दिन जो है ना ये एक बड़ा खूबसूरत दिन है। ऊपर से रमज़ान का महीना, आखिरी अशरा और तमाम दोस्तों की एक दूसरे के साथ मुलाकात, ये खुशाइद चीज़ें हैं।
تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہر رمضان نہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں ادوار میں ایسے پروگرام ہوتے رہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں اور جو درمیان کے اندر جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں، اور ہم یہاں بھی اشتہار خیر میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو بھی اپنی کمیونٹی کے لیے کر سکتے ہیں کریں۔ سید تصور الحسن شاہ گیلانی نے علامہ اقبال کے افکار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال کا سب سے اہم پیغام ہے کہ ہمیں اپنی اقدار، روایات، ثقافت، مذہب کی اقدار کے شجر سے خود بھی اور امریکہ میں رہنے والی کمیونٹی کو بھی پیوستہ رکھنا ہے۔ آج کی اس تقریب سعید کا عنوان حکیم الامت مصور پاکستان، شاعر مشرق، مرد قلندر اور درویش ملت اسلامیہ سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورحمۃ واسعہ کی ذات والا صفات سے منسوب ہے۔ میں ان کا پیغام میں سے خوبصورت شاید مظہر نہ کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ طاہر بھٹا، ناصر وان اور شیخ اشفاق نے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی گزشتہ 10 سالوں سے زائد بالخصوص کرونا وبا کے دوران بلا امتیاز نیو یارکرز اور امریکی عوام اور کمیونٹی کے لیے خدمات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ کمیونٹی ارکان کو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سیما کارٹ، کانگریس وومن ویٹ کلارک کے نمائندے، ڈپٹی پبلک ایڈوکیٹ کاشف حسین، بروکلن بارو پریزیڈنٹ کے معاون خصوصی عمر عثمان کی جانب سے بھی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا عزت افزائی پر شکریہ ادا کیا گیا۔ محسن ظہیر، نیو یارک۔